Good evening to all the viewers who are watching live and is watching on recorded version. Let me just tell you a few things first before starting the CME. Basically, our PPT will be shared on the description box and it will be available for everyone since our second speaker, Dr. Abhijit Chakma sir, is facing some issues and also from our side there are some issues with some technical issues for which reason we cannot share live the PPT, but it will be available to the public on the description after this live ends. And those who are watching on the recorded version will be getting it. Just go click on the description and you will get it. So it was it. And we also want to tell you on behalf of ITT that please play the quiz in order to gain control and means in order to gain a place in the backstage. And we organize a quiz every Sunday, means every CME days from 6 p.m. So be alert. It may be delayed with 15 minutes, but it will be available. So we have wasted too much time. So without wasting any more time, let's just start with the 30 seconds countdown time. Good evening, everybody. Good evening, Good sir. evening. Good evening. And on the eve of 75th Independence Day celebration, today we are hosting on behalf of National Institute of Homeopathy Alumni Association our 54th CME going live on YouTube. And we like to thank all our viewers, all the alumnus across the globe, and all the other viewers, the doctors, students, medicos, everyone, to make the program successful in every growing the numbers in every coming episodes. Now, with permission of our president Kalyani sir, can I call on our inaugurator tonight? Sure. Please call him. Thank you, sir. And tonight, our inaugurator is Dr. Ratan Chandra Shil. He is our alumnus from 9th batch BHMS. Over to you, Dr. Ratan. Good evening, everybody. Namaskar to DN Kalyani sir, my teacher, president of this session. Namaskar to Gitashree Pal madam, professor and HOD of National Institute of Homeopathy, Department of Pharmacy. I am Dr. Ratan Chandra Shil, a 9th batch BHMS of NIH, presently attached to CCRH as a research officer come in charge of RRIH Agartala. It's a great honor for me to inaugurate 54th CME organized by NIH Alumni Association, and for that I am thankful to Dr. Bidyut Mukherjee for giving me this opportunity. Today's first topic is on autoimmune disease. Homeopathy could be better alternative for autoimmune diseases as there is no definitive treatment in allopathic sites. They are only giving palliative relief or symptomatic relief. There is no permanent cure in modern medicine. Dr. Amit Gupta, my beloved junior, having extensive clinical experience in this subject, so he could be one of the most eligible speaker for this topic. And today's next topic is how to write research proposals. As we all know that proposal should be novel and that should be technically sound for obtaining permission from the ethical committee, conducting the study in scientific lines, and finally publishing the result in good peer-reviewed journals. Dr. Chakma, my junior cum colleague, having more than 10 years experience in the field of research,
he could be one of the most suitable speaker for this topic. So friends, my teachers, seniors and juniors, hope you will enjoy the CME. Have a good learning. Thank you all. Namaskar. Thank you. Thank you, Dr. Ratan Shil, and also to Bidyut Mukherjee and Dr. D.N. Kalyani for inviting me to act as a moderator for today's presentation. I am appearing for the first time today, so I am thankful to Dr. Bidyut Mukherjee and Dr. D.N. Kalyani. Good evening to everybody. Good evening to viewers. Organized by the This is organized by the NIH Alumni Association. Today, two speakers will speak on two different topics. First is role of homeopathy in autoimmune disease by Dr. Amit Gupta, 12 batch NI student. All students are good students to me. Next speaker is how to write a research proposal by Dr. Abhijit Chakma. He is 13 batch NI student. He is also a good student. Now he is acting as a research officer, scientist to Central Council of Research in Homeopathy. Now, at first, I am inviting Dr. Amit Gupta to speak on role of homeopathy in autoimmune disease. Thank you, ma'am. I am inviting Dr. Amit Gupta to speak on role of homeopathy in autoimmune disease. Thank you, Gitashree, ma'am. It's a great honor for me to be here. And a very good evening to Dr. Bidyut Mukherjee and Kalyani, sir. Autoimmune disease, in this video, first of all, I will give some introduction regarding autoimmune disease. और उसके बाद कुछ क्योर्ड केसेस जो कि दोज आर वेरी डिफिकल्ट केसेस मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में दे आर सम वेरी मच डिफिकल्ट और वो जब क्योर हुए तो मुझे लगा कि उसे यहाँ डिस्प्ले करना चाहिए अपने कलीग्स के बीच में ताकि जो ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जैसा कि डॉक्टर रतन चंद्र ने बताया, डॉक्टर चंद्रा ने कि मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ पैलिएशन है इसका और या सिम्टोमेटिक रिलीफ है, बट होम्योपैथी can cure autoimmune disease. So before approaching to the cured case, first of all I would like to give some brief introduction of autoimmunity and autoimmune disease. I think it's time to start. First, let's see what is autoimmunity. Autoimmunity is a condition in which the presence of immune response against self tissue. Normally जब हम बीमार पड़ते हैं, जब कोई भी बीमार पड़ता है तो there must be some foreign pathogens, foreign bacteria, virus और foreign antigen जिसके response में हमारी body respond करती है and that is disease. But when this foreign antigen or this protein substance are generated in our body, so by mistake हमारी immunity उसे attack करती है और उसे destroy करती है. In general, autoimmunity is not a disease until it destroys our body. Then we can. The other one is autoimmune disease. What is autoimmune disease? Disease is a condition in which we suffer. So in autoimmunity, generally there is no suffering, there is no disease, there is just autoimmunity. But autoimmunity may be harmless phenomena. However, if these responses causes significant organ damage, this results in autoimmune diseases. Autoimmune diseases are a major cause of chronic morbidity and disability affecting up to 1 in 30 adults at some time. This is a great percentage, approximately 3.5% of the whole population can be suffer from chronic morbidity due to autoimmune disease. तो जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं आया था तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सीरियस कंडीशन है. देन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आई केम टू नो
these are such a serious condition है, this is such a disastrous कि लोग सफ़र करते रहते हैं, स्टेरॉइड्स और बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती है, बट उन्हें कोई खास रिलीफ नहीं होता, दे ओनली गेट टेम्पररी रिलीफ. Next is autoantigen. These are antigen despite being a normal self tissue constituent. These are normal self tissue constituent जो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है. But in the target of a humoral or cell-mediated immune response are called autoantigen. Means these are normal tissue cells, normal organs, normal tissues on which our immunity, our immune system, by mistake attacked and destroyed, and that is called autoantigen. And in response to autoantigen, our body produces autoantibody. The production of autoantibody against self protein. This is autoantigen is called autoantibody. Autoantibody immune reactivities in patient blood or CSF provide a key diagnostic information. जब हमें diagnose करना होता है कि body में autoimmune disease है या नहीं है, then this autoantibody helps a lot. There are some very common autoimmune diseases like psoriasis, alopecia areata, rheumatoid arthritis, celiac diseases, SLE, IBD, MS. There are several autoimmune diseases. These are common autoimmune diseases. इसमें जो modern medicines में या old school जिसे हम अपनी homeopathy में कहते हैं, वो इसमें सिर्फ सप्रेशन या पैलिएशन इस तरह की चीज़ें होती है, एंड देन एज ए रिजल्ट इट टर्न्स इनटू अ मोर सीरियस डिजीजेस. ससेप्टेबिलिटी के आधार पे ये फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट टू सीरियस डिजीज ये कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू पैलिएशन एंड सप्रेशन. Like there is no definite cause of autoimmune disease. Exactly, no cause, no known cause, no definitive cause. But there is one theory that some microorganisms like bacteria, virus, pathogens, other pathogens, and some fungus, etc. They and some drugs also, because there is in modern days in modern medicine there is extensive use of medicines. बहुत सारे यूजलेस मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं या पेशेंट को दिए जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होती है, एंड दैट कैन गिव राइज टू ऑटोइम्यून डिजीज. Some probable causes are hyperimmunization. This hyperimmunization is what? मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखा है कि पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, हम उसे एक वैक्सीन दिलाना चाहते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन बच्चे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन में बहुत ज़्यादा होती है, एंड ड्यू टू हाइपर इम्यूनाइजेशन हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है, एंड ड्यू टू कंफ्यूजन ये ऑटो इम्यून डिजीज का एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है. अदर रीजंस आर क्रोनिक इन्फेक्शन वैक्सीनेशन, वायरल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड सम मेडिसिन और ड्रग्स. मेडिसिन और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स से ये हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, और कुछ नए नए प्रोटीन्स बन जाते हैं, कुछ नए नए एंटीजन बन जाते हैं ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. और इस नए एंटीजन को हमारी बॉडी फॉरेन सब्सटेंस की तरह कंसिडर करती है और अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, और ऑटोइम्यून डिजीज इसमें हो सकते हैं. लाइक सम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यू कैन से, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनमें ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है ऐसे लोगों में. लाइक दिस इज मोर कॉमन इन वीमेन दैन इन मेन. नॉर्मली ऑटोइम्यून डिजीज मैंने जितना भी पढ़ा है, जितने भी रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं और जितने भी एक्सपीरियंस गेन किया है, कि दिस आर ऑटोजोमल डिजीजेज. एक्स लिंक डिजीज में वीमेन आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, एक्स लिंक डिजीज में मेंस आर ससेप्टेबल, बट ऑटोइम्यून डिजीज में वीमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. जितने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस मेरे पास आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन्स आर वीमेन. There are some genes in HLA loci. HLA is human leukocyte antigen. इनके लोकाई पे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रिगर करते हैं. Some other susceptible genes include those determining cytokines activity, that there is co-stimulation and cell death. So ये सेल डेथ और उसके इन चीज़ों से जो कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी जीन्स की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. There are several acquired factors including infection, cigarette smoking and hormonal levels. These are predisposing factors. There is one very interesting thing is molecular mimicry.
What is molecular mimicry? There is cross reactivity between infectious pathogen and self एंटीजन. ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ एंटीजेंस हैं जिस पे हमारी एंटीबॉडी ने अटैक नहीं किया, वो सेफ होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट नहीं होते. लेकिन जब इनकी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, जो इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं हमारे बाहर से, बैक्टीरिया वायरस जो आते हैं, तो इनकी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है एंड ये कुछ नए एंटीजन का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये मॉलिकुलर मिमिक्री होती है. इन्हें ऐसा लगता है हमारी बॉडी में, हमारे एंटीबॉडी को, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, इम्यूनिटी को, कि दीज आर फॉरेन सब्सटेंस, बिकॉज ये मिमिक करने लगते हैं फॉरेन सब्सटेंस को सेल्फ एंटीजन के साथ मिल करके. एंड इसकी वजह से देयर आर सम रिलीज एंड सिक्वेस्ट्रेड एंटीजन फ्रॉम डैमेज टिश्यू. इसकी वजह से हमारी बॉडी उस पर अटैक करती है. नॉर्मली दीज आर नॉट यूजुअली विजिबल टू द इम्यून सिस्टम, जो कि बाद में ये ट्रिगर करते हैं ऑटो इम्यूनिटी को. There is alternatively infection may result in production of inflammatory cytokinins and which overwhelm the normal control mechanism that prevent bystander damage. Side effects of some drugs, for example, the metabolic product of anesthetic agents, halogens bind to liver enzyme, resulting in structurally novel protein. ये नोवेल टर्म नोवेल कोरोना वायरस से भी आप रिलेट कर सकते हैं. देयर इज समथिंग विच इज न्यू, विच इज नॉट नोन. सो कुछ ड्रग्स, जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ ड्रग्स होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं, कुछ ऐसे कन्वर्शन करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें कन्वर्ट होती है जिससे कि वो कुछ नए प्रोटीन बन जाते हैं विच इज़ नॉट अर्लियर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अब ये पहले से हमारी बॉडी में नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को लगता है कि दिस आर टोटली न्यू. न्यू मीन्स फॉरेन, और ये फॉरेन सब्सटेंस समझ करके उस पर अटैक करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए न्यू और फॉरेन एंटीजन बाय इम्यून सिस्टम एंड द एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड टी सेल्स डायरेक्टेड अगेंस्ट इट एंड कॉज हेपेटिक नेक्रोसिस. There are some classification of autoimmune disease. Classification there is according to sensitivity, कि ये कितनी सेंसिटिव है, इतना कितना डैमेज किया है बॉडी को, सीवियरिटी के आधार पे. टाइप 1, 2, 3 एंड 4. The Gales and Coombs classification, it is first one is type 1 hypersensitivity. This is relevant in allergy but is not associated with autoimmune disease. Like बहुत लोग कहते हैं कि किसी पेशेंट को वीट एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है, किसी पर्टिकुलर जो एलर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारे एलर्जी की चीज़ें निकलती है जिसमें कि पता होता है कि इस पेशेंट को इन इन चीज़ों से एलर्जी है. तो दीज आर स्टार्टिंग ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज से ये चीज़ें शुरू होती है और उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 2. इन टाइप 2 द इंजरी इज लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड मीन्स यहाँ पे सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से क्या होता है कि डैमेज हमारी बॉडी में कम होते हैं. देयर कैन बी सिंगल टिश्यू और ऑर्गन डैमेज जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी अटैक करती है और थोड़ा डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज नहीं होता. बट इन केस 3 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी इज ए जनरलाइज्ड रिएक्शन, पूरी बॉडी पे रिएक्शन होता है रिजल्टिंग फ्रॉम इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन which initiate activation of a classical complement cascade as well as recruitment and activation of phagocytes and CD4 plus lymphocytes. The site of immune complex deposition is determined by the relative amount of antibody, size of the immune complex, nature of antigen and local hemodynamics, generalized deposition of immune complex like SLE. In चीज़ों SLE like this disease are result of type 3 hypersensitivity. In type 4 this is the most severe form जहाँ पे पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है और डैमेज होना शुरू हो जाता है. एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड मैक्रोफेज मीडिएट फैगोसाइट्स एंड टिश्यू डैमेज. सो दिस इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज. Gales and Coombs classification you can see here immediate type 1, type 2, type 3, type 4 and the mechanism and some examples like type 1 is allergic diseases, type 2 ABU blood transfusion reaction, जैसे किसी को अगर गलत ब्लड चला गया तो उसमें भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है स्किन हमारी बॉडी का. एंड देन टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स, serum sickness, farmer's lungs. Type 4 is acute cellular transplant, rejection, nickel hypersensitivity, etc. So these are based upon the classification of this autoimmune disease.
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन्वेस्टिगेशन। कैसे पता लगता है कि हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज है? तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ऑटो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में होते हैं, जिसे डिटेक्ट किया जाता है। देयर इज मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स CD4 वगैरह, C4 C3, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनके इन्वेस्टिगेशन से लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ें पता लगती है। देयर इज वन थिंग, क्रायोग्लोबुलिन्स। द क्रायोग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट अदर इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही ये act करती है, and which form immune complex that precipitate in cold. That's why it is called cryoglobulin. Cryo is a term connected with cold, extreme cold, high, very low temperature. Sorry. There is one very important, very interesting thing I came through the, जब मैं इसमें देख रहा था, मैं जब इस पे काम कर रहा था ऑटो इम्यूनिटी पे, तो देर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज टोलराइजेशन. What is tolerization? It is a form of vaccination via the gut. यानी कि वैक्सीनेशन, नॉर्मली वैक्सीनेशन इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, बट हियर वैक्सीनेशन इज वाया गट. OPV होता है, बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग. So here patients are orally dosed with small amount of a protein which is either directly or indirectly involved in the sufferer's particular autoimmune disease. So जो सफरर होते हैं उनके ऑटोइम्यून डिजीज, जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है किसी सफरर को, उसके कुछ प्रोटीन के अमाउंट को लेकर के ओरली पेशेंट को दिया जाता है. इससे क्या होता है? दिस ट्रीटमेंट फॉर ऑटोइम्यून डिजीज इमर्ज्ड इन लेट 90s एंड होल्ड्स प्रॉमिस फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मिसमैच टिश्यू और बॉडी पार्ट्स. नॉर्मली ट्रांसप्लांट, अगर मैच ट्रांसप्लांट ना हो तो पेशेंट की लाइफ बचाना मुश्किल होता है, तो कुछ ऐसे उपाय ढूंढे जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में या मेडिसिन के दूसरे फील्ड में, जो कि पेशेंट की कैजुअलिटी को बचाया जा सके, पेशेंट को की डेथ को बचाया जा सके, डेथ ना हो. तो ऐसे में कुछ मिसमैच्ड टिश्यू पार्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो वो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, इनफैक्ट रिजेक्शन के चांसेस ही होते हैं. तो उसमें टॉलराइजेशन से, ये वैक्सीनेशन, ओरल वैक्सीनेशन से ये पार्ट्स पेशेंट को दिया जाता है orally. Here patients can be pre-tolerized instead of having to wait for a good match. They could be pre-treated so they could accept a larger degree of incompatibility and still have a successful transplant. Incompatibility होने के बाद भी इनकम्पैटिबिलिटी होने के बाद भी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो, इसके लिए ही टॉलराइजेशन को खोजा गया था, इस मेथड को अपनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट्स विद डायबिटीज वुड बी गिवन इंसुलिन, दोज विद MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस वुड बी गिवन अ प्रोटीन फ्रॉम द माइलिन शीथ, एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम uveitis receive a protein called S antigen. So this method, आप देख सकते हैं यहाँ पे there is some like cures like, यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलिया अप्लाई हो रहा है. डॉक्टर हैनेमैन ने भी कहा है अपने फिलॉसफी में कि जो एलोपैथी है वो क्योर नहीं कर सकती, वो चीज़ों को सप्रेस करती है, पैलिएट करती है, टेम्परेरी रिलीफ देती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन. एक्सीडेंटली हमारे MCQ में भी कई बार पूछा जाता था, ओरल वाइवा में भी पूछा जाता था कि एलोपैथी क्या क्योर कर सकती है. एलोपैथी कैन क्योर ओनली व्हेन देयर इज सम होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट. तो यहाँ भी वही चीज़ लागू हो रही है कि मॉडर्न मेडिसिन ने भी जाने अनजाने लाइक क्योर्स लाइक को एक्सेप्ट करके या उसको फॉलो करके दिस टॉलराइजेशन को उन्होंने मिसमैच्ड जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ट्रांसप्लांट के लिए इन्होंने यूज़ किया. ऑटोइम्यून डिजीज, अब हम पूरी तरह से होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहे हैं कि यहाँ पे जब मैंने रिपेट्राइशन टेबल में कुछ ऑटोइम्यून डिजीज के नाम डाले, तो रिपेट्राइशन टेबल में मल्टीमाइजमेटिक कुछ मेडिसिन आए, जैसे लाइकोपोडियम एंड नेट्रेमोल लीडिंग द लिस्ट, लाइक डिजीजेज सोराइसिस, ग्रेव्स डिजीज, क्वार्टर, एसिली, आर्थराइटिस सीलियक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि कुछ मल्टीमाइजमेटिक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन ही इसमें अच्छा काम करती हैं, और मुझे रिजल्ट्स भी इससे काफ़ी अच्छे दिखे हैं. नाउ हाउ टू अप्रोच ऑटो इम्यून डिजीज ट्रीटमेंट. जैसे होम्योपैथिक अप्रोच क्या होना चाहिए अगर ऑटो इम्यून डिजीज हम ट्रीट कर रहे हैं, तो द बेसिक रूल इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. हम पेशेंट का केस टेकिंग करते हैं, स्पेशली उनके मेंटल सिम्टम पे हम बहुत ज़्यादा
जोर देते हैं क्योंकि पेशेंट की सफरिंग बहुत हाई ग्रेड की होती है, हमारी इमेजिनेशन से बाहर। अनटिल एंड अनलेस हम उस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तभी हम समझ पाते हैं कि ये डिजीज कितनी सीरियस है। तो मेंटल सिम्टम्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिजिकल सिम्टम्स ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्रोनिक डिजीज में बहुत सारे सबसाइड हो जाते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं, हमें रियल पिक्चर नहीं मिल पाती। तो ऐसे केस में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स स्पेसिफिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो मेंटल सिम्टम पे हम ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा अच्छे से हम टोटलिटी इरेक्ट कर पाएंगे और अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएंगे। देयर इज एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट, लाइक अगर कई बार वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स होती है टोटलिटी के बाद भी, तो हम एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक एंटीसिप्लिटिक एंटीसोरिक मेडिसिन देख करके बीच में इंटरमीडिएट, देन हम वापस से उस मेडिसिन पे आते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज जो मैंने देखा है, वोवेल नोसोड्स वर्क्स वंडरफुली इन ऑटो इम्यून डिजीजेस, लाइक बैसिलस नंबर 7 and 10 को मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ही सक्सेसफुली यूज किया है, दे वर्क्स अमेजिंगली। मॉर्गन प्योर इन सोराइसिस, साइकोटिक कंपाउंड इन एलोपेशिया एरियाटा, मॉर्गन गार्टनर इन सीलियक डिजीज, दीज आर वोवेल नोसोड्स, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है ऑटो इम्यून डिजीज में। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ प्रेफर्ड पोटेंसी, अब मेडिसिन के सिलेक्शन के बाद आप पोटेंसी के सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। सो विद ऑटो इम्यून डिजीज, जो मैंने खुद भी फील किया और बहुत सारे रिसर्च पेपर में भी पढ़े हैं, कुछ अमेरिकन जर्नल्स में भी मैंने पढ़ा है कि ऑटो इम्यून डिजीज में एल एम पोटेंसी वर्क्स वंडरफुली। एल एम पोटेंसी नॉर्मली जब हम सी एम पोटेंसी में देते हैं विद ऑटोइम्यून डिजीजेज, वी आर लिटिल मोर वेरी ऑफ एग्रावेशन, एग्रावेशन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एग्रावेशन आर डिफिकल्ट विद ऑटोइम्यून डिजीज, और उसमें जो एग्रावेशन होते हैं उसे हैंडल करना भी अच्छा खासा मुश्किल होता है। पेशेंट ऑलरेडी बहुत सीरियसली सफ़र कर रहा है, उसके बाद उसका सीरियस एग्रावेशन या कुछ मॉडरेट एग्रावेशन भी इनटॉलरेबल होता है और पेशेंट आपके पास नहीं टिकता, वो कहीं और चला जाता है डेफिनेटली पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ, और इसके बाद उसकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। So aggravation are difficult with autoimmune diseases. So you must keep in close contact with these patients. ऐसे patients को आप रेगुलर फॉलोअप में करें, शॉर्ट टर्म में मेडिसिन दें, और उनके टेलीफोनिक या आजकल वीडियो कॉल पे भी कुछ पेशेंट्स अगर दूर रहते हैं तो आप उनके रेगुलर फॉलोअप में रहें। And for potency in the treatment of MS or other autoimmune disease, LM potency, if the reaction is too much, you can give a higher LM. अगर हमने LM potency दिया किसी पेशेंट को और रिएक्शन हुआ, इट मीन्स एग्रावेशन अगर हुआ, तो हम उसे एंटीडोट नहीं करते, हम और हायर LM potency देते हैं ताकि देन यू न्यूट्रलाइज इट अ लिटिल बिट मोर। Okay, with centesimal potency you tend to see a little more action and reaction. Centesimal potency ज़्यादा एग्रेवेट करती है और उसमें क्योर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट आपके पास नहीं टिकता। ऑब्वियसली मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं सेंटेसिमल पोटेंसी देने के बाद उनका एग्रावेशन ऐसा हुआ है कि बड़ी मुश्किल हो गई उन्हें हैंडल करना, समझाना, क्योंकि नॉर्मली आप उन्हें नहीं समझा सकते कि व्हाट इज पैलिएशन, बिकॉज वो ऐसे सफ़र कर रहे हैं, उनको एनी हाउ रिलीफ चाहिए। किसी भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को एनी हाउ पेन से रिलीफ चाहिए, किसी भी सोराइसिस के पेशेंट को इचिंग से और ड्राइनेस से रिलीफ चाहिए, तो पैलिएशन की तरफ वो जाएंगे ही जाएंगे। आपके पास अगर वो टिक रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली आपको पोटेंसी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। Although LM potencies are also catalyze strong reactions, they are usually gentle. Reactions तो इसमें भी होते हैं लेकिन वो gentle होते हैं, वो ज़्यादा लास्ट नहीं करते, एक दिन या 2 दिन में उनका एग्रावेशन कम हो जाता है और पेशेंट को समझाना आसान होता है। If you don't see any reaction with, this is very important, if you don't see any reaction with LM potencies, कई बार ऐसा होता है कि हमने LM potency दिया, अच्छे से सिलेक्शन करके दिया और उसने काम नहीं किया, then you can go to a centesimal potency and then back to an LM। ऐसा अमेरिकन जर्नल में मैंने पढ़ा है और मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी एक्सपीरियंस किया है कि सेंटेसिमल पोटेंसी की 1 या 2 डोज देने के बाद वापस से हम LM पोटेंसी पे आते हैं तो अच्छा रिएक्शन होता है और क्योर और जो रिलीफ है पेशेंट को वो बेटर होता है। सो LM पोटेंसी और सेंटेसिमल पोटेंसी को कंबाइंड अगर किया जाए तो हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। एक केस आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ ए केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये पेशेंट मेरे पास 2016 में आई थी और इनका RA फैक्टर उस समय 225 था। इट इज़ ए केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा थी। इस केस को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे DP मेमोरियल
होम्योपैथिक क्लिनिक का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने इस केस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एलेबरेट किया है कि कैसे कैसे पेशेंट की सफरिंग थी, वो कैसे उनको ठीक किया गया। उस समय इनका RA फैक्टर 225 था जब पेशेंट मेरे पास आए थे। ये पास के एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा करके परेशान होकर के वापस मेरे पास आए थे। सो नॉर्मल वैल्यू 20 से कम होना चाहिए और इनका 225 था, मतलब नॉर्मल वैल्यू से 10 टाइम्स ग्रेटर, और उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा थी। कुछ महीने की ट्रीटमेंट के बाद द रिजल्ट केम टू 4.26 मीन्स लेस देन 5, एंड ये 2017 में ये पेशेंट ठीक हो चुकी है, एंड इवन आफ्टर 5 years अभी भी वो पेशेंट मेरे पास आती है अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज होम्योपैथिक क्योर, वी कैन से इट होम्योपैथिक क्योर। यहाँ पे पैलिएशन नहीं हुआ, टेम्पररी मेडिसिन नहीं चली है, एंड फ्रॉम 225 in few months the patient in just 4 months, you can say from November 2016 to March 2017 ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गए। सो यहाँ पे होम्योपैथिक से अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश हो रहा हूँ कि होम्योपैथी से अच्छा यहाँ पे कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो ऑटो इम्यून डिजीज में इतने अच्छे से काम करती है, और इतनी सीरियस डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स का जब यूट्यूब पे कई वीडियोस आते हैं, उस पर जब मैं उनका रिव्यू पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी ज़्यादा वो सफरिंग है उनकी। Excuse me। उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और चूंकि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो पेन किलर खा खा के अपनी किडनी खराब कर लेते हैं। अगर वो होम्योपैथी में किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास आ जाए तो शायद उनकी सफरिंग बहुत कम हो जाए। ऐसा ही एक और केस ऐसा ही एक और केस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्योर हुआ, जो कि ये मेरे ऑनलाइन पेशेंट है। इनका RA फैक्टर 189 था। कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये भी नेगेटिव हो गई, अप्रॉक्स 6.8। So you can see the serious condition, autoimmune disease such as rheumatoid arthritis. This is also very much curable under homeopathy. Curable. There is no palliation, there is no suppression. और ठीक होने के बाद पेशेंट की दोबारा सफरिंग नहीं होती। Since it is an autoimmune disease, so there is chances of uh, uh, recurrence of the symptoms. कुछ कई बार ऐसा होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है तो कई बार सोराइसिस वगैरह मैंने देखा है कि चीज़ें दोबारा से अपीयर होती है। एलोपेशिया एरेटा में मैंने देखा है कि कई बार दोबारा से चीज़ें रीअपीयर होती है। कुछ और केसेस ऑटोइम्यून डिजीज के मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए हैं। ये सीलियक डिजीज इस पेशेंट को थी, इस बच्ची को, ये जिसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी कहते हैं। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ इसका जो TTG चल रहा था उस समय 800 से ज़्यादा था। नॉर्मली इट इज़ लेस देन 12। सो यू कैन सी कि ये कई 100 गुना ज़्यादा इस पेशेंट का था, कई गुना ज़्यादा, मतलब 12 से 800 अप्रोक्सीमेटली 90 टाइम्स। सो इस पेशेंट की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, कुछ भी गेहूं की चीज़ें खाने से इसे प्रॉब्लम होती थी। शी इज़ एट प्रेजेंट अंडर माई ट्रीटमेंट और उसकी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी वो 149 के आसपास इनका है, उससे कम भी हुआ था। 82 तक अभी चल रहा है पेशेंट का। सो शी विल बी वेरी मच हेल्दी, वो क्योर हो जाएगी, होम्योपैथिक क्योर होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये रीडिंग मैं बहुत जल्द अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से 12 से नीचे ले आऊँगा। देर इज़ केस ऑफ एलोपेशिया एरियाटा, ये भी केस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्प्ले किया है, DP मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक पे। ये पेशेंट मेरे पास जनवरी 2000 एग्जैक्टली ईयर्स मैं भूल रहा, 2016 या 18 में आई थी ये। तो ये इस कंडीशन में आई थी, ये एक डिप्रेशन में थी। अब सोचो एक 18-20 साल की बच्ची को इतने बड़े पैचेस अगर बन जाते हैं। ये उस समय दिल्ली के अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी थी, लेकिन कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी। जब ये मेरे पास आई तो फिर मुझे भी लगा थोड़ा केस डिफिकल्ट है। देन मैंने टोटलिटी का सहारा लिया। इसमें टोटलिटी से काम नहीं हुआ था तो फिर मैंने सिफलिनम दिया था 1 डोज, उसके बाद इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई थी। यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ द क्योर फ्रॉम हेयर टू। धीरे धीरे इस पेशेंट के हेयर्स आने लगे थे थोड़े, और नेक्स्ट फॉलोअप के बाद कुछ हेयर्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कुछ और हेयर्स आने शुरू हुए थे नेक्स्ट फॉलोअप के बाद। फिर हेयर्स और ज़्यादा आने लगे उस पैचेस में, लगभग पूरा पैच इस पेशेंट का भरने लगा था, छोटे छोटे हेयर्स आने लगे थे। उसके बाद यू कैन सी हियर देयर इज मार्वलस इम्प्रूवमेंट।
फिर ये लगभग पैचेस इसके भरने शुरू हो गए थे और लगभग 7 से 8 महीने के ट्रीटमेंट में ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई थी। यू कैन सी हियर फ्रॉम जनवरी 2018 टू अगस्त 2018 ये 8 महीने की ट्रीटमेंट से इस पेशेंट की जो बहुत बुरी हालत थी एलोपेशिया एरियाटा, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज एंड शी इज परफेक्टली ऑल राइट। ये अभी भी मेरे क्लिनिक पे विजिट करके अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए कभी कभी छोटे पैचेस बन जाते हैं जो कि बहुत आसानी से कुछ डोज की मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। So you can here also see the scope of homeopathy in fact कि होम्योपैथी कितना अच्छा काम करती है ऑटो इम्यून डिजीज पे, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं होता। पेशेंट पैसे और समय दे करके थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे में होम्योपैथी वर्क्स वंडरफुल। ये ऐसा ही केस है, इसमें भी एलोपेशिया एरियाटा का है। पेशेंट कुछ महीनों में ये बिल्कुल ठीक हो गए। ये पेशेंट भी थी, ये भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं बढ़ूंगा एक ऐसे क्योर्ड केस की तरफ जिसको मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी ज़्यादा डिस्प्ले नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो थोड़े से डिस्टर्बिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर्स से कि अगर वो थोड़े से कमज़ोर दिल वाले हैं, अगर वो चीज़ों को थोड़ा सा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को ऑफ कर दें। आई एम सॉरी टू से। लेकिन अभी कुछ सोराइसिस के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं उस केस को आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। व्हाट इज सोराइसिस? इट इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसकी सफरिंग आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी हाइपर प्रोलिफरेटिव स्किन डिजीज। इसमें क्या होता है, स्किन की लेयर्स थोड़ी मोटी हो जाती है, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है अनकंट्रोल्ड। और ये कंडीशन इन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप एंड फॉर्म स्केल्स एंड इची ड्राई पैचेस। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज। ये नॉर्मल स्किन है जहाँ पे केराटिन लेयर और एपिडर्मिस डर्मिस दीज आर ऑल इन नॉर्मल कंडीशन। बट इन सोराइसिस देयर इज पैराकेराटोसिस। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, और देयर इज थिकनेस ऑफ केराटिन लेयर, सो देयर इज हाइपर केराटोसिस। और कुछ माइक्रो एब्सेस भी बनते हैं, और जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज है स्किन के अंदर की, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वजह से सोराइसिस होती है। There is some triggering factor of psoriasis. The condition appear to be a polygenic. इसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये बीमारी हेरिडिटरी कंसीडर की जा सकती है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ जीन्स आए जो कि ट्रिगर कर रहे हैं सोराइसिस। देयर इज 9 genetic psoriasis susceptibility loci that have been identified लाइक PSORS 1 to 9। ये 9 जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं। ये ट्रिगर करते हैं सोराइसिस को। दे आर अदर ट्रिगरिंग फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड ड्रग्स। लिथियम वाले कुछ ड्रग्स होते हैं, सम अल्ट्रावायलेट लाइट्स, अब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है। मेरे पास एक और पेशेंट आई थी जो फादर की डेथ के बाद उसे सोराइसिस डेवलप हुआ था। तो मैंने मेंटल कॉज, और होम्योपैथी में इसका बहुत बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में नहीं के बराबर होता है, कि वो मेंटल सिम्टम्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। बट फॉर अस मेंटल सिम्टम इज़ फॉर ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस। उसके सिम्टम्स की ग्रेडिंग भी बहुत हाई होती है जब हम मेंटल सिम्टम्स को लेते हैं। There's types of psoriasis: chronic plaque psoriasis, flexural psoriasis, gutted psoriasis, and erythrodermic and pustular psoriasis. बहुत ज़्यादा डिटेल करूंगा तो थोड़ा समय भी कम है। So these are 4 types of psoriasis. There are common sign and symptoms. psoriasis के patients क्या क्या सफ़र करते हैं, क्या क्या symptoms होते हैं उनके, like rashes, dryness of skin, there is fissure, skin cracks होती है बहुत ज़्यादा dryness होने की वजह से, there is flakiness and peeling, skin जैसे fruits के पील्स निकलते हैं, जैसे छिलके निकलते हैं, वैसे स्किन पील ऑफ होती है इसमें। स्मॉल बम्प्स होते हैं, थिकनेस और रेडनेस भी इसमें आती है स्किन पे। माइंड में डिप्रेशन होता है, सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट की कि वो डिप्रेशन में रहते ही रहते हैं। देयर इज सम मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स फॉर सोराइसिस। देयर इज इन्फ्लेम्ड टेंडन्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, इचिंग, जॉइंट स्टिफनेस, प्लेक्स और स्मॉल डेंट्स इन नेल्स। नेल्स भी थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं सोराइसिस के पेशेंट्स के। और जो पेनफुल जितने जॉइंट्स होते हैं वो भी काफ़ी पेनफुल होते हैं। देयर कैन बी सेल्फ केयर फॉर सोराइसिस।
जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने अभी बताया कि जो सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं वो मेंटली बड़े अनस्टेबल हो जाते हैं अपनी सफरिंग से। सो परस्यूइंग एन इंजॉयबल एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो, स्ट्रेस बस्टर हो, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। देयर इज पेट्रोलियम जेली जो कि वैसलीन के नाम से पॉपुलर है। इसे अप्लाई करने से जो ड्राइनेस और जो स्केल्स होते हैं उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है, ड्राइनेस कम होने से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है। देयर इज लाइट थेरेपी, exposure to bright light using a device called a light box mimics नेचुरल लाइट। सो नेचुरल लाइट के अगर एक्सपोजर में आते हैं तो स्किन थोड़ी सी हेल्दी होती है। ऐसे भी हमें पता है कि अगर हम सन हीट ले, नेचुरल लाइट ले, तो हमारे बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होती है और वो स्किन के लिए थोड़ी हेल्दी होती है। थोड़ी सी टैनिंग हो सकती है लेकिन वो हमारे स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। देर इज अल्ट्रा वायलेट लाइट थेरेपी। अभी हमने इसके ट्रिगरिंग फैक्टर में अल्ट्रा वायलेट लाइट देखा था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के अगर अल्ट्रा वायलेट का एक्सपोजर ज़्यादा हुआ तो सोराइसिस के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिर से सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट इससे सफरिंग हो रही है और यही हमारे सेल्फ केयर में भी यूजफुल होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी फॉर सीरियस स्किन डिजीजेज यूज्ड along with स्पेशल मेडिकेशन दैट इंक्रीजेज लाइट एब्जॉर्प्शन, एंड लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद स्किन थोड़ी सी हेल्दी होती है। मॉइस्चराइजर टू हाइड्रेट्स एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम डैमेज। Coulter extract is also useful to soothe scaling and itching of skin. There is no definitive treatment in modern medicine. They use mostly steroids, जो कि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेशेंट की सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है। सो दे यूज स्टेरॉइड्स। दिस मॉडिफाइज और स्टिमुलेट्स हार्मोन इफेक्ट्स ऑफन टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और टू टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर के जो कि डैमेज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। दे आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स विच अनप्लग्स ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल, जैसा कि आपने उस पिक में देखा था कि नीचे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होते हैं और स्किन हेल्दी नहीं रह पाती। सो दिस विटामिन ए डेरिवेटिव्स अनप्लग ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स एंड हेल्प्स प्रिवेंट न्यू ब्लॉकेज। कुछ नया ब्लॉकेज ना बने, उस ब्लॉकेज को भी ये रिपेयर करने में और प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। एक स्लोज स्किन सेल ग्रोथ, जैसे कि आपने देखा कि स्किन की सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि स्केल्स बनते हैं और पीलिंग ऑफ होती है, ये विटामिन ए डेरिवेटिव भी इसे स्लो करते हैं। And anti-inflammatory, this is very important and very useful to counteract swelling in joints and tissues। जो इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, स्किन में, उसे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। दिस इज वेरी डेंजरस। मेरे एक पेशेंट से अभी मुझे मालूम हुआ था कुछ समय पहले कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स रिड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ड्रॉप कर देती है हमारी इम्यूनिटी को। इससे क्या होता है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। कोविड में जिनकी भी इम्यूनिटी वीक थी उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा हुई। तो जो जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे थे उनकी ज़िंदगी बचाना काफ़ी मुश्किल हुआ था कोविड के समय में। सो जो भी सोराइसिस की वजह से या किसी और बीमारी के कारण इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे थे, उनके साथ बहुत ही बुरी हालत हुई थी कोविड के समय में। क्योंकि बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस जब हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के साथ, तो कोविड जैसे सीरियस इन्फेक्शन में क्या हुआ होगा, ये जस्ट इमेजिन करने की बात है। Some vitamins are help to promote normal body functions, growth and development. These are the basic treatments. ये पेशेंट को मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया था। ये बहुत ही सीरियस केस है सोराइसिस का। मैंने कॉलेज में भी कई सारे केसेस देखे थे, लेकिन अभी तक मेरी लाइफ का ये सबसे सीरियस कंडीशन है, सबसे सीरियस केस है सोराइसिस का। ये 31 जनवरी 2018 को आए थे। तो आप यहाँ पे स्केल्स देख सकते हैं, जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया सोराइसिस को, ये क्लासिकल आपको पिक्चर यहाँ दिख रहा होगा कि स्किन की थिकनिंग हो रखी है, स्केल्स बने हुए हैं और ये पेशेंट के जॉइंट्स पे, फ्लेक्सर मसल्स पे है। तो ये पेशेंट की काफ़ी बुरी हालत थी। कुछ और आप इमेजेस में देख सकते हैं, लाइक दिस इज, ये एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पे भी इसके स्किन की थिकनिंग हो रखी है। और ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग इमेज है, ये बैक पोर्शन है पेशेंट का। यहाँ पे बहुत ही
सीरियस कंडीशन थी पेशेंट की। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केल्स, दीज आर स्केल्स, पूरा पीठ बिल्कुल एकदम गंदा हो चुका था, बहुत बुरी हालत थी पेशेंट की। Sorry। सो इस इमेज को देख करके थोड़े से कई लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैंने इसी के लिए कहा था कि आप थोड़ा अगर थोड़े दिल के कमज़ोर हैं तो इन इमेजेस को ना देखें। इसके बाद इस कंडीशन को देख करके जब मैंने देखा तो एज ए डॉक्टर मैंने कई केसेस देखे थे, कई सीरियस स्किन डिजीजेस भी देखा था, लेकिन इसे देख करके एक बार मैं भी सहम गया, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि भाई पेशेंट की क्या सफरिंग है। मतलब ये पेशेंट अपने मतलब लाइफ से बिल्कुल परेशान हो चुका था कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसे लगता था कि किसी भी तरह से कोई इस सफरिंग से छुटकारा दिला दे। जब ये मेरे मेरे क्लिनिक पे आया, जब ये जिस जगह पे बैठा था उसके चारों तरफ स्केल्स स्केल्स निकल करके बिल्कुल जमा हो गए थे, और काफ़ी मतलब वाइट वाइट स्केल्स बिल्कुल जमा हो गए थे। और आप कह सकते हैं कि बड़ा विचित्र सा उस समय माहौल था कि मैं इट वाज स्ट्रेंज टू हैंडल सच ए केसेस। बट मुझे लगा था कि एज ए डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरी ड्यूटी भी है कि मेरे पास जो भी है मैं उसकी ट्रीटमेंट करूँ। तो फिर मैंने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया। जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे तो इनकी जो कंडीशन थी बहुत ही जैसे ज़िंदगी से हारे हुए, बिल्कुल कंधे झुके हुए मेरे पास आए थे। उदास उदास से लगता था कि भाई चलो हर जगह दिखा लिया, अब ये इस डॉक्टर को भी टेस्ट किया जाए कि क्या है नहीं है वटेवर। तो मैंने जब पूरा केस लिया इनका, तो जो केस की टोटलिटी आई वो ये थी। माइंड सैडनेस, ऑब्वियसली इनका सैडनेस बहुत ज़्यादा था, डिप्रेशन में ये थे। फियर ऑफ पीपल इनके साथ बहुत हाई था, क्योंकि ये अपने आप को कहीं भी जा नहीं सकते थे इस सफरिंग की वजह से, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपोज होती थी बहुत ज़्यादा, ये दिखती थी इनको, तो ये इनके साथ बड़ी दिक्कत आती थी। तो पीपल को भी ये अवॉइड करते थे, लोगों को वो डर लगता था इनको, और कॉन्फिडेंस इनके अंदर बिल्कुल लो हो चुका था, इनके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद ही सफ़र कर रहा है, अगर किसी ने टोक दिया तो उसकी सफरिंग कई गुना बढ़ जाती है। एनजाइटी डिजीज़ को लेकर के, फिर क्योर को लेकर के। शाम के समय इनकी एनजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, कारण कि जब ये घर जाते थे अपने काम से, कपड़े चेंज करते थे, अनड्रेसिंग भी एग्रेवेट करता था, मेंटल एग्रेवेशन होता था इनको। तो जब कपड़े चेंज करते थे तो अपनी स्किन जब देखते थे तो इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कई कई गुना ज़्यादा इनको लगता था कि भाई लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बिल्कुल ये होपलेस हो चुके थे कि ये बीमारी मुझे इस बीमारी से अब छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जितना भी हो सकता था इन्होंने कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ खास इनको इम्प्रूवमेंट इनकी नहीं हुई। इन सारे सिम्टम्स को लेकर के जब मैंने टोटलिटी किया, तो जो फर्स्ट मेडिसिन, जो लीडिंग रेमेडी थी, इट वाज रस्टक्स, और विंटर एग्रावेशन भी था, जॉइंट्स इन्वॉल्व थे। तो सारे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को, एक्सेप्ट रेस्टलेसनेस, क्योंकि रेस्टलेसनेस रस्टक्स का कैरेक्टरिस्टिक है, पेशेंट में रेस्टलेसनेस नहीं थी, पहले रही होगी लेकिन लॉन्ग सफरिंग में वो खत्म हो चुकी है, जिंदगी से हारे हुए जैसे लोग होते उस तरह की कंडीशन हो चुकी थी। तो रस्टक्स मैंने एलएम पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करना शुरू किया। 0/1 से मैंने इस पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू की। फिर 31 मार्च के बाद जब 8 फरवरी को मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी, थोड़े से स्केल्स बढ़े। ये बैक की कंडीशन है, ये कमर के पास की है, ये भी थोड़े से डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। और पैरों की स्किन थोड़ी सी, जो स्केल्स थे वो निकलने शुरू हो गई, और अंदर से कुछ नॉर्मल स्किन आने शुरू हो गए जो हेल्दी थे कंपेरेटिवली। फिर 30 अप्रैल को जब मैंने 0/1, 0/2, 0/3 फॉलोअप जारी रखना शुरू किया पेशेंट का, रस्टक्स का ही, तो कुछ महीनों के बाद जो एब्डोमिनल एरिया वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका था, काफ़ी ठीक है। ये आप इमेज के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं, ही इज़ वेरी मच बेटर। और इसके दूसरे पार्ट्स भी बॉडी के काफ़ी ठीक हो रहे थे, लाइक दिस इज़ लेग्स, जो कि आपने देखा कि लेग्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। ये भी 30 अप्रैल 18 में ये काफ़ी ठीक थी। इसका फ्रंटल एरिया भी आप देख सकते हैं, पेशेंट की काफ़ी ठीक है, ग्रेट इम्प्रूवमेंट हुई, और हाथ भी काफ़ी ठीक थे। पैर भी आपने देखा, फ्रंटल जो आगे का एरिया है, एंटीरियर पोर्शन, ये भी पेशेंट की काफ़ी इम्प्रूव हुई। लेकिन 23 जून, लगभग 6 महीने बाद, ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुके थे। जितने जितनी चीज़ें थी, यू कैन से कि 90% से ज़्यादा ये ठीक हो चुके थे। ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है इनका एब्डोमिनल एरिया, इनका पैर भी लगभग ठीक हो चुका है, बिल्कुल हेल्दी कंडीशन है, ग्रेनुलेशन हेल्दी ग्रेनुलेशन है, स्किन के जो स्केल्स है वो सारे जा चुके हैं, बिल्कुल हेल्दी फिट इनका हम कह सकते हैं। पीठ बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। बहुत बुरी हालत थी, जैसा कि आपने पिछले इमेज में देखा था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी।
और अगर हम कंपैरिजन करें, अगर आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा अगर अच्छे से, तो आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो जनवरी से लेके जून तक लगभग 6 महीने के ड्यूरेशन में इस ऑटो इम्यून डिजीज, इसकी ग्रेट सफरिंग इस पेशेंट की काफ़ी हद तक यू कैन से दैट अप्रॉक्सीमेटली ये पेशेंट क्योर हो चुका है। ये हर पॉसिबल ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स का, एंटी इन्फ्लामेटरी, सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद जब इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो ये होम्योपैथी से इतनी अच्छी कंडीशन में ये पेशेंट होता है। यू कैन सी हियर द प्रूफ ऑफ होम्योपैथिक, मैजिकल होम्योपैथिक, द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ इसके बाद ये भी है, आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या कंडीशन थी पेशेंट के पीठ की, और सिर्फ 6 महीने की कंडीशन में, सिर्फ 6 महीने के ट्रीटमेंट से वो पेशेंट कितना अच्छा हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ऑटो इम्यून डिजीज में होम्योपैथी नहीं है तो कौन है? मॉडर्न मेडिसिन के पास जवाब नहीं है। पैलिएशन सप्रेशन सप्रेशन के बाद पेशेंट सफ़र करते रहते हैं, लेकिन हमारी होम्योपैथी ने, हमारी अच्छी होम्योपैथी ने इस पेशेंट को इतना रिलीफ दिया कि ये अब एट प्रेजेंट मुझे ये कांटेक्ट में नहीं है, लगभग 4 साल हो चुके हैं, बट जब मैंने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद किया था तब ये लगभग ठीक हो चुके थे। ये हाथ की कंडीशन में आप देख सकते हैं, पैरों की कंडीशन में आप देख सकते हैं। दीज आर ऑल मैजिक ऑफ होम्योपैथी, दीज आर ऑल ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। कि मैं शायद ही कोई दूसरी ट्रीटमेंट हो, शायद ही कोई दूसरी पैथी हो मेरी नॉलेज के हिसाब से कि जो इतने अच्छे क्योर कर सकता है ऑटोइम्यून डिजीज का। चाहे आपने एलोपेशिया देखा, चाहे सीलियक डिजीज का देखा, या आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का देखा, अब सोराइसिस का आप देख रहे हो। तो ये जितने केसेस थे, ये सारे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के कुछ अमेजिंग क्योर में से थे। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इन केसेस को ठीक करने के बाद मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने होम्योपैथी पढ़ी। कई बार थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती है, कुछ कॉलेज में भी, कुछ कलीग से और कुछ सोसाइटी में, कि आप कई बार पिंच किए जाते हो कि आपने होम्योपैथी पढ़ी है। लेकिन अगर ऐसे केसेस क्योर होते हैं तो मुझे लगता है हर किसी को होम्योपैथी पढ़नी चाहिए। एनआईटी जैसे कॉलेज से हमारे जो टीचर्स हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसी की नॉलेज के हिसाब से, उसी की नॉलेज के बेस पे हम इतने अच्छे क्योर कर सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये सारे इमेजेस प्रूफ है कि ऑटो इम्यून डिजीज में होम्योपैथी कितना बढ़िया काम करती है। सो द रेफरेंस है कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक से मैंने रेफरेंस लिया था, कुछ इमेजेस लिए थे और बाकी मटेरियल थे। सो मैं कंक्लूड करूँगा, एंड वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म कि उन्होंने मुझे अपने केस को डिस्प्ले करने का मौका दिया, और मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। Back to Dr. Bidyut Mukherjee, please. Many points. Cross reactivity is a new thing I have heard from you, and you have given a lot of information like type 1, type 2, type 3, type 4 hypersensitivity. Then tolerization is a new thing I have heard. This is the vaccination through gut. So many new things I have heard. Not only I have heard, but all of the viewers, they have heard. It is a great opportunity to all of us. Allopathy suppress, you have told allopathy suppress karta hai, no cure. But in homeopathy, mental symptoms is to be given more emphasis. Potency selection in autoimmune disease, you have told to use LM potency. Aggravation mode in autoimmune disease. So in centesimal potency, there is more aggravation. Sometimes you have told me in one case, the centesimal 1 or 2 potency, then back to LM potency. This is very nice thing. Acha result you have got in rheumatoid arthritis. Then you have told about psoriasis, steroid aggravate karta hai. Immunosuppressive drug is more dangerous. You have given Rastux 0/1 potency and you have got nice result. So many things we have heard from you, and I think everybody is benefited from your speech today's evening.
So thanks to you. Now I am contributing something regarding autoimmune disease. What is autoimmunity? The immune system defends the body against the infections and certain other diseases. It is made up of different organs, cells, and proteins known as antibodies. It identifies, attacks, and destroys germs and other foreign substances. Sometimes the system makes mistake and attack the body's own tissue or organ. This is called autoimmunity. As for example, in type 1 diabetes is an autoimmune disease in which the immune system develops the cells of pancreas, destroys the cell of pancreas which produces insulin. And some more things to tell you that where pathology ends, homeopathy starts. From drug proving record, we did not get the pathological symptoms. Autoimmune disease is a pathological condition. We will get from clinical proving. Autoimmune disease, incurable disease. There is only scope of palliation. There is two stages for autoimmune disease. One is reversible stage, another is irreversible stage. In reversible stage, there is chance of homeopathy to cure. But in irreversible stage, only palliation you can do. In reversible stage, functional stage, homeopathy can act, but in irreversible stage, where structural changes have occurred, then only palliation is to be done. In Fragile X syndrome, mental retardation can be managed by homeopathy. Homeopathy has scope in homeopathy in autoimmune diseases. Here, own cell is recognized as antigen or foreign cell. An antigen and antibody against antigen antibody is prepared, and antigen antibody complexes are deposited in different parts of the body. So this is syphilitic miasm. So antisyphilitic drug is to be considered. Where there is destruction, syphilitic miasm. Where there is proliferation, psychotic miasm. Where there is functional problem, then soric miasm. So accordingly, the drug is to be selected. And I want to tell you that I have cured one case of psoriasis in 98-99 in NIHOPD. I have treated with sulfur in LM potency. This is from my own experience. I can tell you I have cured a case of psoriasis. So this is all from my side. Now I am handing over the mic to Dr. Bidyut Mukherjee. Or I will give, you tell me whether I will give the mic to Dr. Abhijit Chakma, or I will give to Bidyut Mukherjee. You just suggest me. Now I am inviting Dr. Abhijit Chakma, our next speaker, who is a research officer, homeopathy, scientist 1, Central Council of Research in Homeopathy, to speak on how to write a research proposal. Thank you. Thank you, ma'am. Good evening to all, respected teachers, seniors, and all my NHEMs. First of all, happy Independence Day to all of you in advance. When our country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th Independence Day. I am happy to be among with you all, and thanks to the organizer, especially Dr. Bidyut Mukherjee sir, for inviting me as speaker in today's 54th online CME.
organized by NIH Alumni Association. Also, I feel privileged and honored to have Professor Dr. Gitashree Madam, who is our pharmacy teacher and as well as moderator of today's CME, and also to Dr. RC Shil as an innovator, and he's also my officer in charge in RRI Agartala. So without wasting time, I am starting my topic. Actually, due to some technical issues, I cannot share the PPT online, but I think as per already told by the organizer that you can download and you can see the PPT or PDF file from description box. So before myself, Dr. Amit Gupta was there, who was talking about some autoimmune diseases and their cures by homeopathic medicines. So that was totally clinical aspect. So I am going to some research topic, that is how to write research proposal. You all may think that as I am from research background, research organization like CCRH, my topic is on research, but it is not only research. This topic is very important, especially for the PG scholars, PhD aspirants. So, how to write a research proposal? I am going step by step. You can write down or you can just listen carefully. So, first of all, while we are writing a research proposal, we need to write down the name, designation, department, affiliation of the guide, co-guide, or principal investigator under whom you are going to start your research work. So, number one is you have to write down your uh, guide, co-guide, PI names with their designation and affiliation. Then second, you have to write down the site of the study, whether it is multi-site or single site, whether you are going to conduct this research in on only in a single site or multi-site. If this is in multi-site, you have to write down all the name of the study centers. Like if you are going to study on psoriasis at multi centers like in Kolkata, in Guwahati, in Delhi, you have to write down details of each center in case of multi center, and in case of single center, you have to write down just only that center name. That is like if you are going to conduct the research in NIH, just write down the NIH Kolkata. This is the second point. You have to write down whether your study is single site or multi site. Third point is very important, that is title of the proposed study. You have to write down the title of the proposed study. This title should be clear. It should be clear, brief, and self-explanatory. Uncommon words, abbreviation are to be avoided. This title should contain number one, that who will be the participants, your patients, population, participants, problem. What is the problem? Number one. Number two, intervention or prognostic factor or exposure, whether you are going any intervention or just observational. Number three, comparison, whether you are comparing with placebo group or any other group. If there is no placebo or none, you have to mention everything. And possible outcome. So by mnemonic, PICO, 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 you can remember this, that for P, it stands for patients, population, participants, or problem. I for intervention, C for comparison. You are comparing with placebo group or with any other group. O for outcome. These four things uh, should be there in your title. So title should be uh, written as per these conditions. So I am just giving an example like sleep pattern, aggressive behavior,
and sustained use among school children, school students of Manipur, a cross-sectional study. So here are the who are the patients or population or participants? Here the participants are school students of Manipur who are aggressive and using substance use. So your problem is you want to see the sleep pattern, aggressive behavior and substance use among school student of Manipur. A cross-sectional study. You are just observing. So you are not giving any intervention, you are just observing. So this study is observing and there is no any comparison with any other. Another example is evaluation of homeopathic treatment in polycystic ovarian syndrome, a single blind randomized placebo controlled pilot study. So here is a comparison is there that you are comparing with placebo. This is single blind randomized. And what is the problem? You are want to see the uh, efficacy of homeopathic treatment in polycystic ovarian syndrome. So in this title, you are getting all the components like for the population or patients, participants, problem. Second one is intervention. You are giving homeopathic medicine, and third is comparison. You are comparing with placebo group. So 3 points are gone. Now number 4, that is introduction. You have to briefly describe about the background, existing knowledge with references. If you are going to study on psoriasis, you have to write down little bit about psoriasis. Existing knowledge with references. What you know about psoriasis till date from medical literature books, you have to write down with their references. Knowledge gap and what information the present study will add. You have to write down why you are going to study this, why you are going to do this research. If there is any lacuna, if there is any deficiency, then only you will start this research. Because suppose uh, sulfur acts best in psoriasis, this study already done, and you are again doing that sulfur, whether sulfur is very good or not in psoriasis. So it is just replication. So you need not to waste your time and money in repeating the same study. So if there is any lacuna, like whether LM potencies are more effective or centesimal scales are more effective in psoriasis, management of psoriasis cases in homeopathy, there is no information you have earlier, no study was conducted. In that case, you can start a new project, new research study that uh, I want to see whether there is any differences between centesimal scale and 50 millisimal scale in management of psoriasis and which one is better. So this is the knowledge gap. You can whether there is any knowledge gap or not. If there is any gap, you start that project. And also you have to see whether this is this study is rational, whether from after doing this research, this outcome, the outcome from this research work, whether there is any applicability, whether there is any rationality of this study. Because like 2 3 years you are doing research and lots of money wasted, time also wasted, and if there is no any rationality, then money, time, everything is wasted. But if you find that there is a rationality and also the result, that centesimal scales are much more effective in psoriasis patient, then this will be a eye opener for all other colleagues, clinicians, that centesimal scale are very much effective in psoriasis. So try to write down this brief introduction within 500 words. So number 5 is review of literature. This is mainly applicable for first year PG students who are writing, who are preparing and submitting some research proposal to their guide. You have to write down the review of literature
what are the existing knowledges there in particular proposal or particular disease condition. This should be within like approx 1,000 words. In this review of literature, because there are lots of source of information from newspaper, from TV, from a magazine. Everywhere you will get little bit of information from books, but you have to do review of literature from authentic sources like textbooks, Google Scholar, PubMed, Science.gov, ResearchGate, Ayush Research Portal, Forhum. You cannot quote simple from a newspaper, from a magazine which is not peer reviewed or without non-peer reviewed journal. You cannot take information because these are not authentic. So you have to take help of that authentic sources. What I have mentioned, that Google Scholar, PubMed, textbook, Ayush Research Portal, Core Home, etc. You will get lots of information from these sites and these websites. Next, number 6 is research question or hypothesis. There are two types of hypothesis. That is, one is null hypothesis, another is alternative. Null means zero. There is no differences. Like you want to compare with placebo, that homeopathic medicine has no role in treatment of psoriasis, null hypothesis. And another alternative hypothesis is that no, the homeopathic medicines are found to be effective, will found to be effective rather than from placebo. So you have to remember, this research hypothesis or research question should be feasible, interesting, novel, ethical, and relevant, because uh, the research question or research proposal should be feasible. If you are going to start something like irreversible pathology, you want to see some effect of homeopathic medicine, some irreversible condition of like CKD stage 5. So whether this condition uh, the homeopathic medicine will act or not, whether this is feasible or not, whether this homeopathic medicine will able to reverse some conditions of the CKD stage 5, you have to consider everything, because we know in CKD stage 5, this is end stage renal disease. We cannot do much in stage 5. So you have to think accordingly about your research proposal, about your research that disease condition. This should be interesting, something new, ethical, and relevant. You can remember this mnemonic, FINER criteria. FINER, FINER, FINER. F for feasible, I for interesting, N for novel, E for ethical and relevant. So number 6, research question and hypothesis. Next is number 7, aim. You have to give some broad statement about your desired outcome or the general intention of the research. अब ये research क्यों करना चाह रहे हैं? What is your aim? You have to write down little bit a broad statement that मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि whether homeopathy is really effective or not in psoriasis. So ये आपका aim थोड़ा broad आपको statement लिखना होगा. Then objective. This is you have to, this part you have to write down mandatorily whether what is your primary objective and secondary objective. Primary objective होता है जो आप ये देखना ही चाहते हैं whether होम्योपैथी सच्ची में काम करता है कि नहीं करता है. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है whether होम्योपैथी ये सोरियासिस को ठीक करने के साथ साथ कुछ दूसरा भी और कुछ इम्प्रूव कर सकता है कि नहीं. यू हैव टू राइट डाउन इन सेकेंडरी, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल सेटिस्फेक्शन, फिजिकल एबिलिटी. वो सेकेंडरी ऑप्शन में आप रख सकते हैं, लेकिन योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू whether होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स और नॉट इन सोरियासिस. ये आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड.
अब स्पेसिफिकली यू हैव टू राइट डाउन दैट होम्योपैथी काम करेगा या नहीं करेगा, यस और नो, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड भी होना चाहिए। आप सोरियासिस जैसे क्रोनिक डिजीज कंडीशन है, आप मान लीजिए उसका 1 या 2 ईयर्स आप फॉलो अप करेंगे, ऐसा नहीं है कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स आप उसको ये करेंगे, उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। विद इन सम स्पेसिफिक टाइम you will get some information about whether homeopathic medicine is effective or not। क्योंकि 10 ईयर्स 12 ईयर्स कोई टाइम बाउंड नहीं रहेगा, उसके बाद तो पेशेंट का हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उसका ठीक हो जाए। तो योर मेडिसिन स्पेसिफिक एक टाइम पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यू हैव टू राइट डाउन दैट, दैट्स व्हाई दिस योर ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल विद इन सम टाइम बाउंड। निमोनिक लाइक स्मार्ट क्राइटेरिया, स्मार्ट क्राइटेरिया लिख के आप इसको याद रख सकते हैं, दैट एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट क्राइटेरिया से आप ऑब्जेक्टिव को याद रख सकते हैं, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 9, मेथोडोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई रिसर्च होता ही नहीं है। This section is very much most important and must be described clearly in details regarding all the activities that will be performed while conducting the proposed study। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, चाबी लेके आएंगे, गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, चाबी फिर जो चाबी जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे आपको ये करना होगा, फिर आपको इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, देन आप गियर में छोड़ेंगे तब गाड़ी आगे जाएगा। तो हम लोगों का जो मेथड्स है रिसर्च में, तो आपका एक स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन करना है कि पेशेंट कहाँ पे आएगा, ओपीडी में आएगा, आईपीडी में आएगा, देन कहाँ जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होगा, वेदर दैट पेशेंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आप उसका कॉन्सेंट लेंगे और उसको डिटेल्स समझाएंगे योर पर्पस ऑफ द स्टडी, फिर वो कॉन्सेंट देंगे, फिर उसका डिटेल्स केस टेकिंग लेना है, हाइट वेट मेजर करना है, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन योर प्रपोजल अबाउट द मेथोडोलॉजी। आप कैसे कैसे उसको प्रोग्रेस करेंगे, कैसे पेशेंट को फिर एनरोल करेंगे, उसका कैसे मेजर करेंगे, एनरोलमेंट हुआ, ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप, डेसिमल स्केल में देंगे, सेंटीसिमल स्केल में, या 50 मिलीसिमल, यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग ए प्रायोरी। आपको पहले से ये लिख के रखना पड़ेगा, आप कैसे कैसे ट्रीटमेंट देंगे, कितना दिन का फॉलो अप लेंगे, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, कितना गैप में, 15 डेज, 1 मंथ, everything should be clear in methodology। you cannot deviate, single deviation नहीं होना चाहिए, you cannot do some deviation from your methodology। like एक गाड़ी का हम एग्जांपल दिया, आपका जैसे हार्ट है, हम लोग का सबके पास जो हार्ट है वो एक सिस्टमेटिकली काम करता है, इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा से ब्लड आके हम लोग का राइट एट्रियम वेंट्रिकल, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी होके फिर लंग्स में गया, लंग से फिर हम लोग का लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होके पूरा होल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो एक सिस्टम है, उल्टा नहीं होगा, जो लोअर लिम्ब से ब्लड आ रहा है वो इंफीरियर वेना कवा से आएगा, अपर वेना कवा से तो नहीं आएगा। तो दिस इज द सिस्टम which is you have to write down in your research proposal step by step। आप कैसे कैसे पेशेंट एनरोल करेंगे, उसका फॉलो अप करेंगे, क्या मेजर करेंगे, एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन। दिस मेथोडोलॉजी शुड इंक्लूड लाइक स्टडी डिजाइन, आप क्या करेंगे, उसका स्टडी डिजाइन क्या करेंगे, जैसे आप इसको रैंडमाइज करेंगे, रैंडमाइज तो सब जानते ही है, रैंडमाइज करेंगे या प्लेसिबो कंट्रोल करेंगे, कोई कंपेयर करेंगे, नहीं रखेंगे, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। टाइप ऑफ द स्टडी, आप ये इंटरवेंशनल स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशनल करेंगे, या कुछ जस्ट सर्वे टाइप करेंगे, यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। सेटिंग, आप सेटिंग कहाँ पे ये करेंगे, आप जैसे एनआईएच में करेंगे तो ये तो क्लासरूम में नहीं होगा, यू हैव टू राइट डाउन ओपीडी आईपीडी जो भी है। अगर किसी रूम में किसी के जैसे रिसर्च का कुछ अलग सा रूम है उसमें करेंगे, वो पर्टिकुलर रूम का नाम आपको लिखना पड़ेगा, वेयर यू विल डू एंड योर सेंटर नेम। ड्यूरेशन, study duration you have to write down, like within how many months or how many years you have to go, you
going to complete your study. स्टडी पॉपुलेशन कौन होंगे आपको लिखना पड़ेगा, मेल फीमेल होंगे या सिर्फ मेल लेना है या फीमेल, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें तो मेल नहीं आएंगे फीमेल आएंगे, तो उसका एज ग्रुप आपको लेना है। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है कौन सा एज ग्रुप में कॉमन है, उस एज ग्रुप को आपको लेना है। या आप तो 80 ईयर्स अबव नहीं लेंगे या बिलो 15 ईयर्स नहीं लेंगे, तो यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग एज पर एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपको ये सब पॉपुलेशन लिखना पड़ेगा, मेल फीमेल, बोथ, जैसे होता है रिलीजियन जो होता है, ऑल रिलीजियन से आप लेंगे, तो यू हैव टू राइट डाउन अर्बन पॉपुलेशन से लेंगे या क्या बोलते हैं इसको, रूरल एरिया से लेंगे, यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग स्टडी पॉपुलेशन। सैंपल साइज विद जस्टिफिकेशन, आप कितना पेशेंट के ऊपर ये काम करेंगे, 60, 90, 100, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है। इफ देयर इज एनी नो एग्जिस्टिंग नॉलेज, अगर कोई नया कुछ कर रहे हैं उसमें कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट स्टार्ट विथ मिनिमम जो होते हैं वो 30 पेशेंट से आप शुरू करिए। अगर प्लेसिबो के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यू कीप 30 पेशेंट्स इन प्लेसिबो ग्रुप एंड 30 पेशेंट्स इन मेडिसिन ग्रुप। तो ये हो गया एक बेसिक फार्मूला। अगर कोई आपके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना सैंपल साइज होना चाहिए, कितना सैंपल लेने से आपका जो आउटकम है वो सिग्निफिकेंट होगा, सो जस्ट टेक 30-30। एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रायरी है आपके पास, देन उसका बहुत सारा स्टडीज ऑनलाइन वेबसाइट है, SPSS है, बहुत सारा है, आप उसमें ऑनलाइन जाके उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको शो करेगा कि कितना सैंपल आपका होना चाहिए। आपको सब कुछ कंसीडर करना होगा कि हाउ मेनी ड्रॉप्स आउट यू आर एक्सपेक्टिंग, लाइक 60 पेशेंट्स है, आप उसमें 10% या 15% या 20% सोच रहे हैं कि ड्रॉप आउट हो सकता है, तो लाइक 20% होगा तो उस हिसाब से 60 + 20% और ऐड करिए, उसके बाद आपका सैंपल साइज आ जाएगा। एंड बेस्ट वे टू कैलकुलेट द सैंपल साइज is to consult with any statistician, बायोस्टेटिस्टिशियन, या आपके इंस्टीट्यूट में कोई रिसर्च करने वाला, रिसर्च का काम करने वाले जो एक्सपर्ट है, बायोस्टेटिशियन है, उनसे बात करिए, वो सैंपल साइज बता देंगे। फिर आपको सैम्पलिंग करेंगे, कैसे करेंगे, इसका भी एक बहुत सारा एक अलग से CME हो सकता है। सैम्पलिंग टेक्निक बहुत सारा है, रैंडमाइज हो सकता है, क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकता है, नॉन रैंडमाइज हो सकता है, कोई सैम्पलिंग ही नहीं करेंगे, तो ये हो गया बहुत सारा सैम्पलिंग टेक्निक। आई एम नॉट गोइंग डिटेल्स इनटू दिस। फिर स्टडी टूल्स, आप जब स्टडी करने जाएंगे, लाइक यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, लाइक सोरियासिस। अब उसका सोरियासिस का जो सिवियरिटी है उसका मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कोई टूल्स है कि नहीं, कोई स्केल है कि नहीं, यू हैव टू राइट डाउन ए प्रायोरी इन योर रिसर्च प्रपोजल। स्टडी टूल्स, फिर आपका जैसे केस रिकॉर्ड फॉर्मेट, कंसेंट का एवरीथिंग, यू हैव टू राइट डाउन स्टडी टूल्स। आप और कुछ मेजरिंग टैप लेंगे, BP मशीन लेंगे, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन दिस अंडर दिस स्टडी टूल। इंक्लूशन एक्सक्लूशन क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसको रखेंगे नहीं रखेंगे, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर इन योर रिसर्च प्रपोजल। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन डिटेल्स, आप कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से कैसे लेंगे, कौन से लेंगे, उसके बाद एक केस रिकॉर्ड फॉर्मेट होगा, उसको फिलअप करना है, क्या करना है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन। देन डाटा मैनेजमेंट एंड प्लान ऑफ डाटा एनालिसिस, आप तो डाटा ले लिया, उसके बाद क्या करना है, हाउ टू मैनेज, आप कहाँ पे रखेंगे उसको, ऐसे टेबल के ऊपर तो आप छोड़ के नहीं रख सकते हैं, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। कोई एक पर्टिकुलर जगह होगा जो सेफ प्लेस होगा जहाँ पे आप रखेंगे, एंड दैट डाटा जो है आप डाटा एंट्री के थ्रू आप उसको ये इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में रख सकते हैं, EMR। एंड उसका जो डाटा मिलेगा उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, ये भी आपके प्लान में दैट मेथोडोलॉजी यू हैव टू राइट डाउन। आप स्टेटिस्टिशियन से लेंगे या कौन सा आप स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे डाटा एनालाइज करने के लिए, यू हैव टू वेरी मच क्लियर एंड यू हैव टू राइट डाउन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, without ethical clearance you cannot go further for any research work। ethical clearance तो आपको लेना ही लेना है,
Without ethical clearance, you cannot proceed. Every institute, every organization has their own ethical committee. Like NIH have, like NIH also has the ethical committee. Every college, CCRS, we have all. We also have the ethical committee. So in methodology, actually, this is the main what to say रेसिपी. आप बता सकते हैं कि ये रेसिपी है, कुछ खाना बना रहे हो, वो रेसिपी है एक रिसर्च का. जो रेसिपी होता है वो है मेथोडोलॉजी. यू हैव टू डिटेल, यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स इन मेथोडोलॉजी सेक्शन. देन रेफरेंसेस. ऑल्सो आप जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, जो प्रेजेंट जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आप तो किसी ना किसी जगह से कलेक्ट किया है ये इन्फॉर्मेशन. दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कोट इन रेफरेंस. आप कहाँ से लिया है? कोई आपका पेपर जब रिव्यू करेगा, आपका जो गाइड या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है जब चेक करेगा, आप ऐसे उठा के दे दिया या किसी ऑथेंटिक सोर्स से ये कोट किया है, दैट गाइड, को गाइड, पीआई आपका जो है वो ऑटोमेटिकली जब चेक करेंगे वो देख सकते हैं. तो यू हैव टू राइट डाउन योर रेफरेंसेस एज पर आपका जो जैसे आप कलेक्ट किया उस हिसाब से, एज पर योर कलेक्शन. और ये जो रेफरेंसेस होता है, रिमेंबर वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये याद रखिए. वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंस आप ऑनलाइन में जाइए, वेबसाइट में जाइए, जस्ट टाइप वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ऑटोमेटिक आ जाएगा. इसमें आप किसी बुक से कुछ रेफर कर रहे हैं तो वो कैसे लिखना होता है. इफ यू आर रेफरिंग फ्रॉम ए जर्नल, वो हाउ टू राइट दैट reference, everything is mentioned in that Vancouver style of referencing. Anybody can download that reference, Vancouver style of referencing from website, from net. So you have to write down your reference as per Vancouver style of referencing. Actually PPT काम नहीं कर रहा था, नहीं तो आपको दिखा सकते थे. Then number 11, feasibility statement. आप जो स्टडी करने जा रहे हैं, whether this study is feasible or not. आप ऐसा कुछ डिजीज के ऊपर करना चाह रहे हैं, लाइक रियूमेटॉइड आर्थराइटिस. थोड़ी देर पहले बात हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था. if you are going to do some research work on rheumatoid arthritis in some OPD or some PSC of any state government, उसका हमने 2 साल या 3 साल का जो रिकॉर्ड देखा है लास्ट 3 इयर्स का, उसमें देखा है कि ओनली 1 पेशेंट हैज बीन रिपोर्टेड एज rheumatoid arthritis. और आप स्टडी करना चाह रहे हैं विद इन 6 मंथ्स, आप एक स्टडी करना चाह रहे हैं rheumatoid arthritis के ऊपर, होम्योपैथिक मेडिसिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो आप बताइए whether this study is feasible or not in that particular PSC. बिकॉज 3 साल में आप देख रहे हैं कि ओनली 1 पेशेंट ऑफ rheumatoid arthritis पेशेंट का आया है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका 60 पेशेंट्स आ जाएगा. इट इज इम्पॉसिबल. So this is the feasibility statement. आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं on particular disease condition, you have to check whether that particular disease condition or patient with that particular disease condition are available or not, or coming or not. अगर अवेलेबल है, उसके साथ जो टेस्ट जरूरी है वो आपके आसपास में है या नहीं है. अगर है, then you can go for that particular study. So this is the feasibility statement. Number 12 is requirement. आप जो ये स्टडी करने जा रहे हैं, whether you need any infrastructure. Obviously आप कोई ये करेंगे लाइक PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर कुछ काम करना चाह रहे हैं. Obviously you need some OPD और IPD. साथ में आपको प्राइवेसी मेंटेन के लिए जो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए you need some particular, आप तो ओपनली ग्राउंड में नहीं कर सकते. सो you need infrastructure, you need some room, you need some particular specific room. Second is manpower. Whether you single-handedly will do this or you need some supporting hands. Like आपको कोई जूनियर रिसर्च फेलो चाहिए, आपको कोई मेडिकल ऑफिसर चाहिए,
या सीनियर रिसर्च फेलो चाहिए, यू हैव टू राइट डाउन ए प्रायोरी इन योर रिसर्च प्रपोजल। इक्विपमेंट, आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, इक्विपमेंट लाइक बीपी मेजरिंग मशीन, आपको वेट मेजर करने के लिए मशीन होना चाहिए, मेजरिंग टेप, बीएमआई चेक करना चाह रहे हैं, तो you have to very much clear and you have to write down those things which are going to be required in your study. Also बाकी लैब का कोई रिएजन आपको चाहिए, आपके यहाँ पे लैब है लेकिन रिएजन नहीं है, तो टेस्ट बहुत मैंडेटरी है, तो आपको क्या करना करें, आप आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं या रिएजन जो है नॉट अवेलेबल वो आप उसमें लिख सकते हैं कि हमको ये रिएजन जरूरी है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर रिसर्च प्रपोजल। नंबर 13, फंडिंग। आप जो स्टडी करने जा रहे हैं, whether this requires any monetary help or not, आपको कोई इसमें पैसे का जरूरत है, अगर पैसे का जरूरत है तो वो कहाँ से आएगा, आपने ओन अपना पैसा खर्चा करेंगे या कोई उसको स्पॉन्सर करेंगे। if somebody is sponsoring you, then you have to write down that sponsoring agency name with how much you need the money, you have to write down everything that about budget। और जो बजट अगर कोई आपको देना चाह रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रायरी आपको लिखना पड़ेगा कि वो कौन सा स्टेटस में है। जब आप प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं उस समय यू हैव टू राइट डाउन द प्रेजेंट स्टेटस, वेदर दैट बजट ऑलरेडी अप्रूव हो गया या ऑन द प्रोसेस है या यू नीड फर्दर अप्रूवल, ये आपको यू हैव टू मेंशन इन योर फंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, many of us don't know this point, overhead charges। what happens in गवर्नमेंट एजेंसी या आप प्राइवेट में भी करेंगे, जहाँ पे करेंगे आप जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिसका फैसिलिटी आप यूज करेंगे, लाइक आई एम वर्किंग इन लाइक सीकेडी प्रोजेक्ट इन अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, so I am using their resources, I am using their particular room, and I am also having that access to dialysis room। उसका जो यूज कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं, आप जहाँ पे भी यूज कर रहे हैं उसको एक ओवरहेड चार्जेस दिया जाता है 5%। जितना भी आपका ओवरऑल बजट होता है, जैसे 1 लाख हो गया आपका, 5% कितना हो गया, 5000 आपको वो जहाँ पे कर रहे हैं साइट पे आपको देना पड़ता है, बिकॉज आप उसका रिसोर्सेस कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। so that's why this is the overhead charges we have to pay that particular institute college where you are going to conduct your research। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम आपका सेटअप है, सेम कॉलेज में कर रहे हैं, then you need not to pay this overhead charges। only it is required when you are going to start your study somewhere else outside, आपका ओपीडी हो या हो उसके बाहर जब कर रहे हैं, then you need this overhead charges। then number 15, फ्यूचर प्लान ऑफ यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। आपने आपका स्टडी के लिए मैन पावर लिया है, मेडिकल ऑफिसर एंगेज किया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, देन आपने बहुत सारा सामान खरीदा है, वेट मेजरिंग मशीन, बीपी मशीन, कॉस्टली कुछ कुछ चीज आपने खरीदा है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आपने खरीदा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी व्हाट विल डू विद दिस रिसोर्सेस, जो मैन पावर लिया था आप उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे या दूसरे कुछ प्रोजेक्ट में आप उसको एंगेज करेंगे। यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर। आपका जो चेयर टेबल खरीदा होगा, आपने फर्नीचर खरीदा होगा, जो आपने जो लैब का कुछ रिएजेंट खरीदा होगा, जो बचा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, यू हैव टू राइट डाउन। हम जैसे बीपी मशीन कुछ भी मेजरिंग टेप, हम जब कंप्लीट हो जाएगा इसको हम अपना कॉलेज में या किसी को डोनेट करेंगे। यू हैव टू राइट डाउन ए प्रायोरी, आपको पहले से लिखना होगा कि आप इसका क्या यूज करेंगे जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में आता है एक रिसर्च प्रपोजल में, देयर विल बी सिग्नेचर ऑफ पीआई, मीन्स प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, या आपका जो गाइड होगा या को गाइड होगा, देयर सिग्नेचर विद डेट होगा, अलोंग विथ जो प्रपोजल सबमिट किया है
XYZ जो भी सबमिट किया है उस स्टूडेंट का या पीजी स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर जो होगा उसका सिग्नेचर होगा विद डेट। इसमें लास्ट में जितना जितना जो को गाइड है या पीआई है, everybody needs to be signed and that date also be mentioned. So mainly these 15 points are required for writing a proposal, research proposal, and इसके साथ don't forget to attach your annexes like सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ब्रीफ बायोडाटा ऑफ इन्वेस्टिगेटर और गाइड पीजी स्कॉलर विथ रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिकेशन। जो एनेक्सर्स होते हैं उसमें जरूर आपका जो गाइड है उनका थोड़ा सा बायोडाटा दीजिए। इवन जो पीजी स्कॉलर है उसका भी बायोडाटा जानना चाहिए, क्योंकि जैसे गाइड होते हैं, गाइड का भी होने का एक गाइड, किसी पीजी स्कॉलर का अगर गाइड होते हैं उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, लाइक 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इसमें, 5 ईयर्स होना चाहिए, या प्रीवियस कोई गाइड बना है, तो यू हैव टू गिव दैट डिटेल्स इन देयर इंडिविजुअल बायोडाटा। अब इसमें जैसे आप केस रिकॉर्ड फॉर्मेट होता है, आप कौन सा केस रिकॉर्ड फॉर्मेट में ये करेंगे, XYZ आज एक केस शीट में एक केस रिकॉर्ड फॉर्म में मैं फिलअप किया है, दूसरे दिन दूसरा केस रिकॉर्ड फॉर्मेट दूसरे का हमने अप्लाई किया है, ऐसे नहीं हो सकता है। In what particular case taking form you are going to capture the details of the patient, you have to attach that one केस स्टडी फॉर्म, आपका जो केस टेकिंग फॉर्म होता है आपको उसको अटैच करना होगा, उसमें ही आपको फर्दर जो पेशेंट एनरोल करेंगे उसका डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करना है। रिलेटेड क्वेश्चनरी फॉर्म आपका अगर कोई उसमें जैसे सोरियासिस का कौन सा स्केल यूज करेंगे, अगर उसका कोई फॉर्मेट है, यू हैव टू अटैच दैट वन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनफॉर्म कंसेंट फॉर्म। कोई भी रिसर्च करेंगे, यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। विदाउट टेकिंग कंसेंट यू कैनॉट एनरोल दैट पर्टिकुलर पेशेंट, वो इलीगल है एंड वो एथिकल भी नहीं है। ये जो होता है कंसेंट फॉर्म, यू हैव टू बी like print out, you give this to patient in both English and in local language। अब वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो there is official language is Bengali, in one Bengali and another one is in English। तो both the language जो होता है उसमें आप ट्रांसलेट करके दोनों में देना पड़ेगा। This all annexes should be attached with your proposal, जो 5-6 पेजेस का 4-5 पेजेस का जो ये होता है आपका प्रपोजल, उसमें ये आपको अटैच करना होगा। I was talking about that institutional ethical committee. Without ethical committee, you cannot do a research study। तो ethical committee के बारे में जस्ट एक दो लाइन में बता देता हूँ। Like NIH, this ethical committee is headed by chairperson and supported by other members, including the member secretary। जो इंस्टीट्यूट होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो प्रिंसिपल होते हैं, जो हेड होते हैं, वो होते हैं मेंबर सेक्रेटरी, और चेयरमैन जो होते हैं बाहर के आउटसाइड के कोई होते हैं। तो दिस द कंपोजिशन ऑफ द एथिकल कमिटी इज ए मिक्स ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आपको लेना है, एमिनेंट साइंटिस्ट लेना होगा, मेडिकल डॉक्टर्स, क्लिनिशियन, फार्माकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोस्टैटिस्टिशियन, एपिडेमियोलॉजिस्ट, लीगल एक्सपर्ट एंड अ लैब पर्सन। इवन आपको लैब पर्सन भी आपको रखना पड़ेगा इन योर एथिकल कमिटी। अब उसमें कितना मेंबर्स होना चाहिए, दिस इज 5 to 7 होने से चल जाता है। मैं जस्ट CCRS का जो एथिकल कमिटी है, NIH का मैं बता देता हूँ, NIH का नहीं है मेरे पास, हाँ CCRS। तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर के घोष वो है चेयरमैन, जस्टिस एक लॉयर रहता है तो वो है जस्टिस जय संघवी, सुप्रीम कोर्ट का है वो जज, वो मेंबर है। हेमाटोलॉजी एम्स का तुलिका सेठ वो मेंबर है। डॉक्टर राजेश एस शर्मा क्लिनिशियन मेंबर है। BK खन्ना
फॉर्मर प्रिंसिपल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वो भी मेंबर है। मिरुदुल्ला पांडे डिप्यूटी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, वो मेंबर है। मोनिका दत्ता कंसल्टेंट है, मेंबर। कुलदीप जैन, यू नो कुलदीप जैन, डी जैन का बहुत सारे बुक्स है, तो उसका कुलदीप जैन है, वो भी एक वो भी मेंबर है सीसीआरएच का। पोद्दार है, एस पोद्दार, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। देन डायरेक्टर जनरल है, member secretary. Director General is the head of the our CCRH, head of our CCRH. So, being the head of our CCRH and our ethical committee of CCRH, he is the member secretary. वो member secretary का काम होता है to call upon ये जो मीटिंग वगैरह होता है एथिकल कमेटी का, सब मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करके मीटिंग फिक्स करना, डेट फिक्स करना, जो प्रपोजल है वो कलेक्ट करके सबको प्रोवाइड करना बिफोर conducting a committee meeting. So this is a just glimpse of our like ethical committee का composition कैसा होता है. And whenever you are going to do some clinical research, आप कोई clinical condition में कोई human being के ऊपर कुछ करना चाहेंगे, तो you need to enroll your study in clinical trial registry. Clinical trial registry, it is mandatory. Registration of clinical trial is mandatory for क्यों चाहिए? For more transparency in research, sustaining the validity of evidence. आप पहले से बता रहे हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं एंड मेरा ये एक्सपेक्टेड आउटकम है। जब आपका आउटकम आएगा, आपको वो आउटकम भी अपडेट करना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आउटकम एक्सपेक्टेड किया था कि लाइक होम्योपैथी मेडिसिन इफेक्टिव है इन सोरियासिस, और आपका आउटकम ऐसा आ गया कि होम्योपैथी मेडिसिन खा के लोग मर गए। तो योर आउटकम जो है पहले आप देना होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम है, और आपका जो ये है स्टडी करने के बाद जो आउटकम मिला है आपको वो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में यू हैव टू मेंशन। तो आपका जो पहले जो आपने बताया था और ये क्या बोलते हैं स्टडी होने के बाद जो आपका आउटकम है, यू आर जस्ट कंपेयरिंग, वो आसपास में रहना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। So registration of clinical trial is mandatory for more transparent research and sustaining the validity of evidence-based practice and availability of reliable data. इसका और एक advantage क्या है? Somebody is sitting anywhere in the world, वो आपका जो study किया है, he can go through this. ऐसा नहीं कि आप NIH में किया, सिर्फ NIH के लोग ही जानेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपका अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है, एनीवन हु आर इंटरेस्टेड, वो दुनिया की किसी भी जगह पे बैठ के ही कैन सी योर स्टडी, उसका आउटकम क्या हुआ ही कैन सी। तो इसी तरह देयर आर many clinical trial registered in many countries. Country wise there are several clinical trial, but in India we have क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप उसमें ऑनलाइन में जाके www.ctri.nic.in क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स उसमें आ जाएगा। सो आई एम जस्ट एंड ऑलमोस्ट इन माय लास्ट पार्ट ऑफ माय स्पीच। whatever I have told in my on my topic, I am just giving the summary. So how to write a research proposal? So there are 17 points. You just try to memorize, or you can write down these summary points if you have pen or diary. You just try to recall summary. I have told that number 1 is name, designation, affiliation of your guide, co-guide or PI. Then number 2 is your study site, whether this is multi-site or single site. Then title of the study, which is very important. Third point. Fourth is introduction, and 5 is review of literature. 6 is research question or hypothesis. Number 7 is aim.
Number 8 is objective. You may have secondary objective, but primary objective तो होना ही पड़ेगा. Secondary objective वो होता है किसी जगह पे नहीं होता है. Then methodology, which is your recipe, which is your heart and which is your heart in your body. So methodology you have to very clear. Then 10 number points is references. Then 11 number is feasibility statement. Number 12 is requirements. Number 13 is funding. Number 14 is overhead charges. Number 15 is future utilization of resources. Number 16 is signature of PI guide, co-guide, along with signature and date of that PG scholar, PhD scholar, or whoever is submitting that research proposal. And don't forget to add that annexures, whatever that case study form, your any form, consent form, everything you have to annex, you have to attach along with your research proposal. So that's all from my side. That is how to write a research proposal. I hope I could able to make some sense about how to write research proposal. If somebody gets some, I think from this topic, many of us have been benefited. And with these words, and thanking Dr. Bidyut Mukherjee sir and Dr. Gitashree madam for being our guide during NIH time, and that Dr. Ratan Shil, who is my senior as well as presently he is my officer in charge also. I thank everybody and all the viewers for listening to me patiently. Thank you. Over to ma'am. Thanks to Dr. Abhijit Chakma. You have given a nice presentation of how to write a research proposal. You have given 17 points and you have nicely described how to write research proposal. I think all of us are benefited from your learning. And now I have to say something. We have to follow the specific guidelines for that particular writing. As for example, consort for RCT publishing and spirit guideline for RCT protocol. Then home case studies for case report in homeopathy. Whereas in allopathy it is case study, care. It is used in allopathy. And homeopathically it is homeopathic case report. For animal research in vivo experiment, it is ARRIVE, ARRIVE. Prisma guideline for systemic and for basic research, systemic. Prisma guidelines for systemic, and I am telling you, just wait. Prisma for preferred reporting item on systemic review and meta-analysis. Systemic review and meta-analysis. Then REBAR for basic research in vitro cell line studies. STROBE for observational study. Dr. Abhijit Chakma has presented all the things, but he has missed some points that I have told. Specific subjected জন্য for specific guidelines, but for in general, that is you have to follow the IMRAT pattern, that is introduction, material methods, result and analysis, and discussion. So this is for all from my side. I want to thank Dr. Ratan Shil first for introducing me to act as a moderator. Then I want to thank Dr. Amit Gupta for nicely presenting homeopathy in autoimmune diseases. Then I want to thank Dr. Abhijit Chakma for giving a nice presentation about how to write a research proposal. Then I want to thank
Dr. Bidyut Mukherjee for inviting me to act as a moderator. And at last, I want to thank Dr. D.N. Kalyani, who is the president of NIH Alumni Association, for giving me the opportunity to come here and to present this topic, to conduct this seminar. Thanking you all, I want to hand over the mic to Dr. Bidyut Mukherjee. Thank you so much, madam. And it's a very excellent session by both the speakers. But before I go ahead with the session and request our beloved Kalyani sir to say something. First, let us inform all of you that the PPT folder will be attached with the description of this CME link in YouTube. Once the CME gets over, you'll get it after a few 1 or 2 hours. And we are glad to announce that our alumni meet for 2022 will be held on 9th of December 2022 in Kolkata, and we are working on with it. It's an appeal for all the alumni across the globe to come and join the meet to make it a grand success. The delegate or the contributory amount for the alumni meet has been fixed as 1,000 rupees as early bird offer till 31st of this month, that is 31st August. And every alternate Sunday, we are conducting Zoom meeting to have our brainstorming sessions, how best we can go on with the alumni meet. And we can bring all the ex-students of NIH, all the alumnus of NIH back this year after the pandemic. And that's all. I'll request our beloved Kalyani sir to conduct the question and answer session. There is only one question for Dr. Amit. Sir, your opinion, and after that, I'll try to get the question put up on the board, on the screen. Over to you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Many, many thanks to our most competent secretary, Dr. Bidyut Mukherjee, our beloved Professor Gitashree for coming with us and presenting his beautiful moderation. Many, many thanks to Dr. Ratan Shil for nicely inaugurating the program and especially for coming with us to encourage us. Our brilliant speakers, Dr. Amit Gupta and Dr. Abhijit Chakma, for giving their best possible experiences and sharing their vast knowledge of how to perform researches. Thank you all. I just like to add few things more, that today's seminar was really brilliant because it was a compact form of development of homeopathy. Today's seminar, the subjects are really the only way to improve our system, to improve ourselves. That is, first is personal achievements by curing cases with documentations. That is simply the inspiration. We were listening from Dr. Chakma that you must have some references, that I am going to work on this subject. For what? Because I have seen, and I have the documented that this type of number of cases of psoriasis has been cured scatteredly or in a place that has been documented. So that's why I want to perform research on psoriasis, to observe the efficacy of homeopathy on psoriasis. So these are the inspirations what Dr. Amit Gupta presented, and also we are requesting to all of our brothers and sisters of alumni, please keep documentation, bring it with us, let it be circulated. That will give the beginning inspiration of researches, and in a day or within a very short period, by this sort of scattered inspiration, a big research project will come up, and homeopathy will see the real beauty scientific in the scientific world, and will be more precious, will be more honored by research activities. So really is a very good presentation. We were lucky, now we are to some extent unfortunate that NIH is having the biggest outpatient and inpatients of the whole world. Most possible brains, brilliant brains are there.
But NIH has now don't have any research departments or wings to perform clinical or this type of researches for a lengthy period, excepting the PGTs. So what during a few years back, we had a research department, though it was not that much well equipped or well furnished or well nicely organized. Still, through clinical observations, by collecting patients from the OPD, we grouped number of patients and had research activities that I want to focus before you to just give inspirations. Regarding autoimmune disease, as we are talking about, that homeopathy has got immense scope than that of other system of medicine, which is a bit tedious and risky and not always very confident. We had about 2,300 of cases of thyroid dysfunction as per guideline proposal of WHO by 5 research workers in NIH OPD and IPD. And the result was brilliant. That was published in bulletin. You can see it. Then we have been very confirmed that thyroid dysfunctions, one of the greatest autoimmune diseases, common autoimmune diseases, can be very nicely controlled by homeopathy medicines. Number two, I can tell you there is a project of psoriasis in our research department by one of our research fellows. More than 100 cases of psoriasis by photographic presentation. Thyroid research also was done by serological study, clinical, serological, and photographic study. That means observing the goiter, structure of the body, facial appearances. So by these three type of steps, serological, clinical, and photographic, psoriasis also clinical and photographic study, we are able to establish that homeopathy has immense scope on these two type of autoimmune diseases. Another project was done on anti-streptolysin O titer, which is the beginning or a serious state of rheumatoid arthritis, rheumatic arthritis and rheumatic heart, valvulitis and myocarditis, which leads to a handicapped life. That also we had more than 300 cases. Why I am mentioning the numbers? Because research always wants numbers. As you have heard, minimum 60. If there is control, you have to make it 80. So scatteredly, what we are doing here and there, that should be aggregated, amalgamated, or it can. If it cannot be, then these things will be inspiration. But where we go for research, that number must be legitimate number. So more than 300, about 300 cases of ASO titer were tried in OPD in IH, and with a beautiful result. All the cases were studied through serological improvements. On the way of researches on joint disease, we found rheumatoid arthritis. Serologically, we have seen, and OPD, NIH OPD is having the documents that rheumatoid arthritis serologically and clinically can definitely be cured if patient treats according to our guideline. Even ankylosing spondylosis, which is called to be very critical cases, that means HLA-B27 positive. You know that spines or joints become stiffened, patient lose this mobility, ultimately goes to bedridden, without any mobility, which HLA-B27 highly positive. There is a very serious case and seems to be incurable. There are some managemental treatment, your conservative treatment, but ultimately there is no result. In NIH OPD, we have seen ankylosing spondylitis can clinically and serologically can be cured. We have the documents. Then another case I can tell you, that pseudohypertrophic myopathy, where CPK level is very high. That is another dangerous disease. Here also patient gradually becomes swelled up. First calf muscle become hypertrophic, then heart muscles. Ultimately patient goes to bed and leads a crippled, restricted bed life. There also we have seen serologically and clinically pseudohypertrophic myopathy, that means CPK level can become normal. Clinically, patient can come up from the bed. So anyway, these are few examples that NIH, all of you that NIH OPD is a, what should I say, it is a mine of homeopathic or mine of cases, maximum number of cases. I just like to remind you one thing. You might be knowing Professor S.C. Day.
One day he was telling, being angry, that don't think I am coming for your honorarium, not to help the homeopathy, but I come here to see the number of beautiful cases, which is very, very rare in any other modern system of medicine hospitals. In a single day, types of cases in NHOPD is much more than any other hospital. That was his craze, to see different varieties type of cases. So it's our good luck, good chance that we have been exposed to NHOPD IPDs. Many cases were tried in a group, in scatteredly. We will continue. And I must also request to Dr. Amit Gupta and other friends, brothers and sisters, whatever case, always I used to tell these things, whatever patient you are seeing, whatever little case, try to keep documentation, simple by blood test, stool test, urine test, see the picture, then see the changes after your treatment and preserve it. Forward to this platform or any other authentic sources that this case has been cured by homeopathy. If we go on this manner from different corners of the country and abroad, the number of cases, say for example, psoriasis, if we can see from different corners, 500 cases has been cured. So no scientific world can refuse that homeopathy is not effective in psoriasis. So all of us must try to keep documentation, to present before others, to improve our homeopathy and ourselves. Thank you very much for coming over us. Thanks for the viewers, those who will view it later on, and to all who are encouraging, inspiring to continue this CME. Your presence is really inspiring, especially to Bidyut and myself. The more you will come forward, share your experiences, inform your friends to come forward, we'll be more inspired to continue this CME. Thank you, many, many thanks. Thank you. Bidyut, please. Sir, Thank you, sir. Thank you. sir, there is a question from Probir Majumdar. In autoimmune disease, Okubaka, I had sent this question on the screen. I think the question is for Dr. Amit. Sorry. Yeah, I have seen this question, but honestly speaking, I have not used these medicines in autoimmune disease. These are some specific medicine, so I have no idea of this. And Okay. one more thing, this question is not very much clear what Mr. Prabir or Dr. Prabir is asking. This is not very much clear for me. Right. Thank you, Dr. Amit. And for Dr. Probir Majumdar, it's a request from this platform. Please give your question in details. And if you have any clinical trials or anything done in your clinic, never hesitate to send us by our email. Our email is given in the description, as well as I'm repeating, NIH alumnimit@gmail.com. Please send any data or any clinical case details which you might be having in the clinics, which you might have observed. Please send it to us, and we will be analyzing on that. Dr. Kalyani sir will be giving his views in forthcoming CMEs. If any of the viewers tonight is having any question or any suggestions on this, so again, with pranam to Kalyani sir and the speakers tonight, we learned a lot. Gitashree ma'am, thank you so much. Gitashree, if you can put the video on. Ratan is also there, Dr. Ratan. So it's an excellent session by the faculty, by the alumnus and faculty of Northeastern NIH. So we are proud and we are really overjoyed with this participation. It's a request to all of you present tonight, apart from myself and Kalyani sir, please inform the other alumni you are in touch to be a speaker voluntarily, to be a speaker in the CME, to share your thoughts. Thank you. Sir, can I end the session tonight and we'll return to back to... Sure, sure. Thank you, sir. Let us end We are returning back. Thank you, Bidyut. Thank you, Dr. Kalyani and other Many speakers. thanks. Thanks to all.
and good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank Good you, Good night. sir. night. Good night. Good. And to all our viewers, happy 75th Independence Day. Thank you. Sure. Azadi Same to Ka you. Amrit Mahotsav. You can see all the speakers are having the national flag displayed on their names in the screen. And Nice, NIH nice, authorities, nice approach. NIH authorities had also invited the UG and the PG students tomorrow morning at NIH campus for the flag hoisting. So if any of the alumni, UG, PG, DPNH, whoever are present nearby or were willing to go, please be there at NIH. Okay, we are returning For back the to our, special, yes, sir. I was just adding Dr. to Bidyut, just to show NIH that still we are NIH products. We are ready to help NIH at any and every time, Right, sir. even by taking out little grasses. Any work, anything, we are ready to contribute for our institution. So please go there, join with director and others to hoist the flag tomorrow. Right, sir. Thank you, sir. That's Thank you. excellent. Thank you, sir. Thank you, sir. Good Vande night. Mataram. We, Jai Hind. Jai Hind. Jai Thank you. Hind. Vande Vande Mataram. Mataram. Vande Mataram. We are returning back to our backstage editor, Medico Orko Mukherjee. And thank you all. Thanks for watching in live and recorded version. And thank you to all the sirs and ma'ams who were watching, and all the speakers and moderators and innovators and speakers, CME. And I also, on behalf of me and the I team, wish you 75th Happy Independence Day to everyone. Please be safe and be happy with your family. With this, I, Medical Mukherjee, ending this session. See you in our next CME, which will be on, I hope, on 24th August, I guess, 28th August. See you soon. So for now, let's say a good night.